Good afternoon, everyone. Bonjour, tout le monde. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, as we have discussed yesterday, that today we'll start our course, our syllabus with greetings. So, we will just wait for it is 47, 2 to 3 minutes more, then we will start. So, first of all, we'll talk about greetings. So, let me share the screen, then we will discuss. Screen is visible to you all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll start from greetings. So your first topic, the first topic of syllabus of your syllabus is les salutations. Les salutations. Salutation, the meaning of salutation is greetings. So greetings are very important in French language because French is very polite language and you have to use greetings while doing conversation. If you ask something to someone, जैसे यहाँ तो हम पूछते नहीं है, like in any language we have to be polite, but we don't. So, but in France you have to be polite in any case, otherwise the second person to whom you are talking, he or she will not reply or respond. So, les salutations, salutation is greetings. So here you can see les, les. Les, the meaning is the. So in French, le, la, or les, le, or l apostrophe. The meaning is the only. And salutation is greetings. So one more thing is very important here regarding phonetics, that if a word is ending with tion, कोई भी word आपका अगर tion से end हो रहा है, then it will always give the sound of sion. It will always give the sound of sion. So it is les salutations. Les salutations, greetings. The first one is salute. The first one is salute.
So here the one more thing is very important. देखिए फ्रेंच के अंदर एक रूल बहुत बहुत कॉमन रूल है जो आपके आगे तक काम आएगा कि in if a word you are pronouncing any word, so in a word if your word is ending with consonant, अगर आपका कोई word consonant से end हो रहा है so that last letter जो consonant है आपका जो your the last letter we will not pronounce. So if a word is ending with consonant, then we will not pronounce that particular last letter. For example, you can see here salute, S-A-L-U-T, salute. So I'm not pronouncing here salute. I'm pronouncing only, the pronunciation is salute, salute. So here T is the letter that is consonant and your salute is ending with T. So the last letter we will not pronounce in that case. So in general, we use such kind of rules or the same rule we will use. But आपको कुछ words होते हैं there we will pronounce the last letter also. That words you have to memorize as it is. उसका कोई justification नहीं है, कोई rule नहीं है. That words you have to memorize as it is. And for the rest of the words you can use this. Salute. Salute is hello or hi. Salute is hello and hi. आपको किसी को hello बोलना है, hi बोलना है, then you will use salute. Monsieur, monsieur is sir or Mr. Monsieur is sir or Mr. Monsieur. Madame, madame, madam or Mrs. Madame. If you have heard a clothes brand, I think Madame. Female brand है, आपने सुना है नाम? नो सर। अरे आपसे नहीं, मैं गर्ल्स से पूछ रहा हूँ. देखो, there's a brand that is called Madame. So in like here I heard always whenever people say like they pronounce that particular name, they say Madame. So the pronunciation is completely wrong because in French language the do not exist. The और t दोनों word exist नहीं करते हैं. In the place of the we always pronounce the. The की जगह हम क्या बोलते हैं? The. And in the place of t we'll pronounce the. Is it clear? So in the place of the आप क्या बोलोगे? The. और t की जगह आप बोलोगे the. Is it clear? यस सर। So madam, it is not madam, it is madam. Madam, madam. So madam is madam or Mrs. The next word is mademoiselle. Mademoiselle is miss. So here आपको एक phonetics का एक rule है, इसमें phonetics के pronunciation का rule है कि if single s is coming in between two vowels, अगर single s दो vowels के बीच में आता है, then it will give the sound of z. So here I और E के बीच में you can see S, so it will give the sound of Z. That is why I am pronouncing here mademoiselle. OI will give the sound of UA. So mademoiselle, sorry, mademoiselle. Mademoiselle is miss. Then ON O का sound देता है, OU U का sound देता है, तो it will be bonjour. Bonjour. Here I am pronouncing R. So आपको as it is ही याद करना पड़ेगा. There is no justification why we are pronouncing the last letter. We pronounce it because language is like this. So bonjour, bonjour is good day. So bonjour is the word that you can use in a whole day. Any time in a whole day you can use bonjour. Just like namaskar in Hindi. Namaskar हम जो word है, नमस्ते बोलते हैं, हम नमस्कार बोलते हैं. So this word we can use any time in a whole day. पूरे दिन भर में हम कभी भी बोल देते हैं. Whenever you meet someone, you always say namaskar. So in the same pattern, your good day. So in the same pattern, we can use bonjour. But particularly, specifically, if you want to say good morning, good afternoon, or good evening, or good night, for that you can use bon matin. Bon matin. Bon matin is good morning. Bon après-midi, good afternoon. Bonsoir, good evening. And bonne nuit, good night.
So again I'm repeating, salut. Can you please pronounce after me if possible? Salut. Monsieur, Madame, Mademoiselle, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, bonne nuit. I hope it is clear to you all. Yes, sir. So for example, अगर आपको बोलना है, I'm just asking you, say good morning sir और good morning madam, तो आप कैसे बोलेंगे? देखो bonjour को हम ऐसे good morning भी यूज में लेते हैं, गुड आफ्टरनून में भी यूज में लेते हैं, गुड इवनिंग भी यूज में लेते हैं, बट इट इज फॉर स्पोकन ओनली, राइटिंग में नहीं आता है, ठीक है? तो बोनजोर कैसे बोलेंगे अब अगर आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर? Bon matin, Mose. गुड डे सर, गुड डे मैडम. Bonjour, madame. वेरी गुड. बोनजोर मस्यर, बोनजोर मादाम, बोनजोर मस्यर, बोनजोर मादाम. Bon monsieur, bon matin madame. Bon après-midi monsieur, bon après-midi madame. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonne nuit monsieur, bonne nuit madame. And salut monsieur, salut madame. और अगर monsieur और madame की जगह आप किसी का नाम बोलना चाहते हैं, फिर से like anyone if you like, नाम मुझे आपके अभी पता नहीं है. Let me see your names. For example, Aryan, Abhinav, Dipanshu, Dev, Dinesh, Goransh, Harsh, Piyush, Yes, sir. Priyanshu, Viyesh, Samir, Soumya, Shreya, Rishka, Vatsal. Vatsal, you were in C section, na? Vatsal. Login करके गए, बहुत बढ़िया. So, for example, I can say bonjour Aryan, bonjour Abhinav, bon après-midi Aryan, bon après-midi Dipanshu, bonsoir Dev, bonne nuit Dinesh, salut Goransh. So like this I can use. I hope it is clear to you all. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. the next slide is merci. The first word is merci. Merci is thank you. It is not mercy, please. Do not pronounce it mercy. It is merci. Merci is thank you. Merci is thank you. Dhanyavad. Merci. So if someone will tell you thank you, how you will reply? आप कैसे reply करते हैं अगर आपको कोई thank you बोलता है तो? Formally. Welcome. Informally, welcome. कोई it's up to choice. Formally, how you people will reply? If I tell you thank you, then what you will say? Welcome. Welcome, or we can say mention not, or we can say for nothing, or we can say it's okay. So in French, if someone will tell you merci, you have to reply with, or you can reply with de rien, de rien, de rien. तो IEN अगर कहीं किसी वर्ड में आपको IEN दिखाई देता है, तो IEN will give the sound of ear, ear. So de rien, de rien. So de rien is welcome, mention not, it's okay, for nothing. Then if you say
Goodbye. If you want to say goodbye in French, then you have to say au revoir. Au revoir. A-U-O. A-U will give the sound of O. R-E-R. O-I will give the sound of UA. So au revoir. Au revoir is goodbye. So au revoir, monsieur, au revoir, madame, au revoir, Harsh, au revoir, Dipanshu. So Aryan. So I can say like this. Super. Super is superb. Super is superb. Then if you want to say please, देखिए please जो word है बहुत important word है, आपके हमेशा काम आएगा if you speak in French. You have to be polite and सबसे आप if you ask something to someone you have to say please. So s'il vous plaît. So please का भी देखिए दो तरीके से we can use. There are two ways to use please. एक formal एक informal. इनफॉर्मली हम ज्यादा समझते हैं बिकॉज आप फ्रेंड्स के बीच में क्लासमेट्स में आप क्लास में आप दैट टाइम आल्सो वी यूज लाइक स्टिल द प्ले इनफॉर्मल वे में प्लीज बोल देते हैं जैसे इफ यू आस्क समथिंग टू समवन इन योर क्लासमेट इफ टू योर फ्रेंड दे आर प्लीज देना तो आपने प्लीज तो बोला है उसको बट इट इज इनफॉर्मल so in that condition we can use still the play. Still the play is please and in a formal way आप कभी से even with your friend also or your classmates also when you meet sometime or like first time if you meet someone तो आप formal ही रहते हैं चाहे तो स्टार्टिंग के 1 वीक मान लो 15 डेज मान लीजिए या first 2-3 days मान लीजिए you have to be formal if you ask something to someone then you have to say like very formal so in that condition formally if you talk someone then you have to use s'il vous plaît and if you want to please अगर आपको बोलना है then you have to say s'il vous plaît so s'il vous plaît and s'il te plaît meaning is please one is formal and second one is informal then the next word is désolé. Désolé is sorry. Désolé is sorry. So here you can see two type of désolé. एक तो without e है, एक with double e है. एक single e and एक double e वाला है. So single e वाला है, it is for masculine and with double e it is for feminine. So this thing we will I will discuss when we will do gender. That time I will tell you कि इसमें क्या difference है. And please mute your mic. Then the next word is je suis désolé. Je suis désolé. I am sorry. I am sorry. Je suis désolé. Je is I, suis is am, and désolé is sorry. So je suis désolé is I am sorry. And the next word is tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. अलग अलग तीन वर्ड है आपको इनको कलेक्टिवली एक साथ बोलना है कंबाइंडली बोलना है इनको so it will be tout le monde. Can you please pronounce it tout le monde? tout le monde. Very good. So अगर मुझे आपको बोलना है कि थैंक यू एवरीवन तो आप कैसे बोलेंगे? Merci tout le monde. Merci tout le monde. Very good. Merci tout le monde. Very good. So merci tout le monde. Merci tout le monde. Tout le monde. जो आप जो ल है वो ल और monde एक साथ बोल देंगे tout le monde. So tout le monde is everyone. Then the next word is felicitation. Felicitation is congratulations. Congrats. आप कोई अच्छा काम करता है कुछ अच्छा होता है किसी की लाइफ में तो we always say congratulations, congrats by to be बोलते हैं. So felicitation it is in French में हम इसको बोलेंगे felicitation. Felicitation. Here also you can say tion तो co का साउंड आ रहा है. Felicitation is congratulations. So again I'm repeating from the beginning. Merci. Pronunciation only I'm telling you. Merci. De rien. De rien.
Au revoir. Super. S'il vous plaît. S'il te plaît. Désolé. Je suis désolé. Tout le monde. And the felicitation. The last word is felicitation. Felicitation. Felicitation is congratulation. Any doubt? No, sir. Can you please pronounce the next word? IEN will give the sound of ear. So BIEN will be what? Bien. Bien. Very good. Perfect. The parfait monsieur. So bien is fine. Okay, it's okay. Okay, fine. So bien. So you can use like this. आप कभी बोल रहे हैं ठीक है तो you can use bien. Then the next word is we. It is not we. Please बोलना मत इसको we कभी भी बहुत और लगता है तो it is we. It is we. Just wait. So it is we. आता हूं. 1 minute only. So it is we. We is yes. We is yes. Then we have no. No and no. No is no. बोल देना कि नहीं तो नहीं. किसी कोई भी लैंग्वेज बोल दो. नहीं का मतलब नहीं होता है. तो it will be no means no. So no and no in French. In English also it is no. Next word is très bien. जैसे मैं भी बीच बीच में बोलता हूँ very good. So très bien is very good. Très bien. Très bien. Très bien. Very good. Next word is abianto. Abianto. See you soon. Abianto. See you soon. Adame. 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 See you tomorrow. Abianto. Adame. Dame is tomorrow. So a pluta. A pluta. See you later. Alar. Alar. See you on time. So here, here you can see the word a. A के ऊपर accent. The meaning of this is preposition. अगर आप French में देखेंगे तो this is only a preposition. But यहाँ we are using as an expression. The meaning of I is in, at, or to. In, at, and to. The meaning of I is. But here you will find the meaning of this particular word is see you. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. एक्सप्रेशन हमेशा अलग रहते हैं और लिटरल मीनिंग अलग रहता है. So abianto is see you soon. Adame, see you tomorrow. Apluta, see you later. Alar, see you on time. और अगर आप आ के बाद में कोई पर्टिकुलर डे लगा देते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना ओके सी यू ऑन सैटरडे या सी ऑन संडे, तो उसमें भी आपको यही करना है. आके बाद में जो पर्टिकुलर डे है वो आपको पुट कर देना है. जैसे संडे को बोलते हैं दिमोंश, तो आ दिमोंश मतलब सी यू ऑन संडे. आ सामदी सी यू ऑन फ्राइडे, सॉरी सैटरडे. आ Monday, see you on Friday. So like this you can use it. So again I am repeating: bien, oui, no, très bien, à bientôt, à demain, à plus tard, à l'heure. Any doubt in this slide? No, No, sir. sir.
next word is welcome again. So this welcome is completely different. The BA1U and the रिये दोनों में difference है. The रिये आप reply as a respond करते हैं. The रिये में आप जब कोई आपको thank you बोलता है. And when we talk about BA1U is welcome again, but it is for guest. आप होटलरी में जाइए, आपके घर में कोई आता है, गेस्ट आते हैं, that time अब you welcome someone, उस सेंस में हम बोलते हैं BA1U. BA1U is welcome. फिजिकली आप किसी को वेलकम करते हैं, बोलते हैं आपका स्वागत है, that is BA1U. Bienvenue. Bienvenue. Then next word is bon anniversaire. Happy birthday. Happy birthday. Bon anniversaire. अब जैसे मुझे बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आर्यन को, इफ आई वांट टू से आर्यन को मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना है, तो मुझे कैसे बोलूंगा? जैसे बोन एनिवर्सरी आर्यन, खत्म, के बाद में नाम लगा दीजिए, बोन एनिवर्सरी आर्यन, बोन एनिवर्सरी हर्ष, बोन एनिवर्सरी दीपक. So like this I can use these things. So बोन एनिवर्सरी is happy birthday. बट आपको किसी को वेडिंग एनिवर्सरी विश करनी है, then you can say bon anniversaire de mariage. Bon anniversaire de mariage. Wish you a very happy wedding anniversary, marriage anniversary or anniversary. Is it clear the difference between bon anniversaire and bon anniversaire de mariage? The next word is bon fête. Bon fête, happy festival. Bon fête is happy festival. तो देखिए एज ए बिगिनर्स व्हाट यू कैन डू, आपको किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए विश करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो देखिए आप मारियाज से पहले ऊपर DE लग रहा है, तो दैट द यू विल पुट एंड आफ्टर दैट यू विल टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल. जैसे फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन इज गोइंग टू कम, so you can say bon fête de Rakshabandhan. So for the beginners or for starting, like if you want to start speaking, vous voulez parler en français, vous pouvez commencer comme ça. So you can start like this only if you want to speak. So bon fête de Rakshabandhan, bon fête de Holi, bon fête de Diwali, like this you can use. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit is happy meal. Bon appétit is happy meal. Bon route. Have a nice trip. Bon route. Have a nice trip. Bon change. Bon change. Good luck. देखिए TH is sh. फ्रेंच के अंदर च भी एग्जिस्ट नहीं करता है. CH is not ch. It is sh. शलगम वाला. So bon change. Bon change. Good luck. Bon change. Good luck. Bonne soirée. Bonne soirée. Have a good evening. Bonne soirée. Have a good evening. Pardon. 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 And the next word is enchanté. अब इसको enchanté नहीं बोलूंगा. It will be enchanté because CH I told you. CH will give the sound of sh. CH will give the sound of sh. So it will be enchanté. Nice to meet you. Glad to meet you. आपसे मिलकर खुशी हुई. Enchanté. Nice to meet you or glad to meet you. Bon anniversaire the mariage we have done. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne अपनी bones होती है. So that is bonne année. Bonne année. Happy New Year. Bon voyage. Voyage जो word है you will find in English also. To travel से related होता है. Voyage is to travel. So bon voyage is happy journey. Bon voyage is happy journey. Bon courage. Bon courage. Best of luck.
Bon courage. Best of luck. Bon vacances. Bon vacances. अब यहाँ पर भी you can see that both words bon and vacances is ending with s, but I'm not pronouncing it because it is consonant. So bon vacances, happy vacations, happy vacations. Bonne journée, bonne journée, have a nice day. Bonne journée, have a nice day. Excusez-moi, excusez-moi, excuse me. Any doubt? No, sir. No, sir. Should I repeat the pronunciation once again? Yes, sir. Okay, so I will repeat for you people. Bienvenue, bon anniversaire, bonne fête, bonne fête, bon appétit, bon appétit, bonne route, bonne route, bonne chance, bonne chance, bonne soirée, bonne soirée, pardon, pardon, enchanté, 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 bon anniversaire de mariage, bon anniversaire de mariage, bonne année, bonne année, bon voyage, bon voyage, bon courage, bon courage, bonnes vacances, bonnes vacances, bonne journée, bonne journée, excusez-moi, excusez-moi. I hope it is clear now. Yes, sir. This is the last slide that we will do today, and the rest of the things we will do in the next class. Okay. How are you? In French, if you want to say how are you, then you have to use comment allez-vous. Here also you will find the both ways you can use. You can say how are you. अगर मैं English में बोलता हूँ ये word how are you, either I am speaking formally or informally, I have to use simple word how are you. But in French, we have to be like there is always a formal and informal way, just like Hindi. For example, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं हिंदी में, तो आप उससे कैसे बोलते हैं? कैसा है भाई? कैसे हो? क्या चल रहा है? Like this we say in Hindi. और यही हिंदी के अंदर अगर आप किसी से if you talk to someone like formally, तो हम बोलते हैं आप कैसे हैं? टोन बदल जाता है, ठीक है? So the same thing we have even in French. तो ये words आपके जो sentences that the sentences are completely different. So for example, formal way to say how are you in French is comment allez-vous, comment allez-vous, comment allez-vous. And informally, if you want to say, then you have to use comment vas-tu, sorry, comment vas-tu. Formally, it is comment allez-vous. Informally, comment vas-tu. Meaning is how are you. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Meaning is how are you. Is it clear now? Yes, sir. Okay. अब देखिए one thing is also important कि आपसे if I'm asking you a question in a particular format, the same format you need to reply. In the same format you need to reply.
So if I ask you kama talebu or kama vatyu, then you have to reply with shave bien, I am fine, merci, thank you, et vous and you. ये देखिए इट इज बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये तो होते ना कि स्कूल में पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि कैसे हैं आप, आई एम फाइन, हाउ आर यू बेटा, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू. तो a new language, if you want to learn a new language, you have to behave like a kid and you have to practice like a kid, then only you can learn. So if someone will ask you kama talebu or kama vatyu, then you will say je vais bien, I'm fine, merci, thank you, et vous and you, formal way में. अगर यही इनफॉर्मली आपको बोलना है तो आपको वो की जगह सिर्फ त्वा लगा देना है. त्वा is you again. So je vais bien, merci et toi, or you can use je vais bien, merci et vous. Then we can also use como ça va. Como ça va is how are you. Simply यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछने में नहीं आएगा, आंसर देने में आएगा. इफ यू आस्क como ça va, it's okay, you can say como ça va, how are you. स्पोकन में आता है यूज में como ça va, how are you. आंसर will be ça va bien, I'm fine, merci, thank you, et vous and you. Comment ça va bien, merci et vous. Comment ça va bien, merci et toi. So like this you can use. The last three words, then we will finish. देखिए, you cannot be always fine. आप कभी भी हमेशा अच्छे नहीं रह सकते. So for that you have some other expressions also. Simply other expression है, तीन expression है. Here you can use also super. Super जो हमने करा है तो वो भी आप यूज में ले सकते हैं. Comment allez-vous, super et vous, merci et vous. Like this also you can use. So and you can use also pas mal. Pas mal. Pas mal is not bad. Pas mal, not bad. Ça va mal, not well. Pas mal, ça va mal. Pas mal is not bad. Ça va mal is not well. I'm not well. Ça va mal. Pas mal, not bad. Everything is fine. So like this you can say. And the last expression is neither good nor bad. This is the expression that we often use. India में अगर आप किसी से बात करेंगे, if you talk to someone, so out of 100, 70 people will say ठीक ठीक चल रहा है या चल रहा है, बस सब ऊपर वाले की है, ठीक ठीक है, it's okay. So neither good nor bad, ठीक ठाक चल रहा है, there's nothing in special. So in French we can use this expression comme si comme ça, comme si comme ça, come see come stop, neither good nor bad. So again the last time I'm repeating, comment allez-vous, comment vas-tu, je vais bien merci et vous, je vais bien merci et toi, comment ça va bien merci et vous, ça va bien merci et toi. Et का मतलब होता है ए, मतलब एंड होता है, बट प्रोनाउंसिएशन इज ए. Ça va bien merci et vous और toi. Pas mal, not bad. Ça va mal, not well. Ça va mal, not well. Comme si comme ça, comme si comme ça, neither good nor bad. Any doubt? No, sir. So I hope that it is clear to you whatever we have done. And once you need to practice, just check it once. एक बार कोशिश करिएगा. And if you have any doubt, then please ask.
So I hope it is clear to you all, whatever we did today. And जब तक आप Yes, sir. practice नहीं करेंगे, देखिए practice is very important. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous devez pratiquer. You have to practice. If you want to learn a new language, you have to practice. So it is your choice, because as I told you, I will teach your examination point of view. वो भी चलेगा, वो I have considered. And if you want to learn as a language, so if you ask me for help, then definitely I'll help you. So merci beaucoup. We finish our class here only. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. À demain. Can you please translate? Merci beaucoup. Sir, it means thank you very much. Au revoir. Goodbye. À demain. See you later. See you tomorrow. Tomorrow we don't have class, na? See you. So see you. Alendi. Alendi is see you on Monday. Alendi. See you on Monday. Okay, merci. Bye. Thanks a lot. Yes, sir. Avosi. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, beta. Messi. Merci. Messi. Merci. Very good. एक सिंगल वर्ड भी दिन का बोल लेते ना, दैट इज मोर देन इनफ. अगर वो टंग पर आ गया आपके.